Kids' bedrooms used to stock weapons. Hamas rockets found in strollers. Search operations continue at Al-Shifa Hospital. Israel war machine rages on. Top focus on India first. Let me get you the latest from Gaza City and North Gaza. Israeli soldiers have found a tunnel shaft used by Hamas terrorists at Gaza's Al-Shifa Hospital. The Israeli Defense Forces have claimed that a body of an Israeli hostage was also found in the hospital compound. A 65-year-old woman abducted by Hamas terrorists on the 7th of October and murdered in Gaza. Israeli forces have intensified their operations in the Gaza Strip and in the West Bank with raids at the Ibn Sina Hospital after an IDF soldier was killed in a terror strike. All 3 suspected terrorists have also been killed. Israeli forces have dropped leaflets in the Khan Yunis area of southern Gaza asking people to evacuate immediately. Does this indicate a major expansion of ground operations beyond Gaza City towards southern Gaza? That's our top story. Hamas terror network linked to Al-Shifa Hospital in Gaza City stands exposed. Israeli troops are searching rooms and basement of Gaza's biggest hospital after days-long siege that caused global alarm over the fate of thousands of civilians trapped inside. Hamas's tunneling infrastructure inside the hospital is now revealed. The Israeli forces also seized a vehicle containing weapons and ammunition that was to be used in October 7th massacre. IDF forces found a tunnel shaft in Shifa Hospital. Engineering forces are currently uncovering the infrastructure there. We also found a vehicle that has been prepared for the massacre on the October 7 and didn't leave. And we found many weapons in it. I want to emphasize a car of Hamas terrorists with many weapons within the ground of Shifa Hospital. Al-Shifa Hospital has become the main target of the ground operation by Israeli forces, who claim Hamas fighters ran their operations from headquarters in tunnels beneath it. Hamas has denied the charge. After 20 hours of attacking all the hospital facilities, searching and tampering with all the contents and departments, the spokesperson of the occupation army came out as usual with a weak and ridiculous story, saying that he had found several rifles, a Kalashnikov, a laptop, a military uniform, and an old pair of shoes which he displayed on the shelves, and moved from one place to another and appearing in front of journalists as if he has displaying his goods in a supermarket or in a hotel room. Israel says its troops uncovered weapons and terror infrastructure inside the hospital compound after killing fighters in clashes outside. There was no fighting or friction with civilians, patients or staff inside the hospital, according to the IDF. Israel also claims to have found the body of Yehudit Wiss, one of around 240 hostages taken by Hamas gunmen when they stormed southern Israel on October 7. The body was recovered by troops in a building near the Al-Shifa Hospital. Even as Israeli Defense Forces mount operations inside the Al-Shifa and other hospitals in the locality, civilians who have taken shelter in these facilities are demanding a ceasefire. Bureau Report, India Today. Israeli Defense Forces say brick by brick, tunnel by tunnel, hospital by hospital, they are dismantling the Hamas terror infrastructure, military terror infrastructure in North Gaza and in Gaza City. The indication are soon they will expand south of Wadi Gaza River. They intend targeting Khan Yunis. Israeli forces say that Hamas terrorists were using not just the Al-Shifa Hospital as its command and control center, but also other hospitals, including the Al-Rantisi Children's Hospital, as a weapons storage facility, as a rocket launch facility, and as barracks for Hamas terrorists. The IDF claims they've neutralized several Hamas terrorists who are hiding
inside a school, and several weapons and systems have been recovered, thereby making a case for expansion of operations beyond Gaza City. Israel Defense Forces continue to uncover the horrors of Hamas hidden beneath the 3 largest hospitals in Gaza. A tunnel under the Al-Shifa Hospital complex. Weapons and ammunition recovered inside Al-Quds Hospital. And yet another tunnel under the Rantisi Hospital. In fact, the Rantisi Children's Hospital has been used by Hamas terrorists to hide arms and possibly hold hostages. A 6-minute video released by the IDF shows the house of a Hamas terrorist right next to the hospital. I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. A door that is bulletproof, it's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. It's part of the same floor and it slides down here. So it's a cover tunnel so nobody can find it. The tunnel under Rantisi Hospital led the IDF to an operational base. There is a list. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Al-Shifa Hospital. In other hospitals, we are now seeing it in live in Rantisi Hospital. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement. And in this basement, we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. Israel says that some hostages were also kept under the Rantisi Hospital. Yards from here, we find the chair, a woman, clothes, and a rope. A rope next to the legs. Look above it. It's a baby bottle. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. You don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area. And we can see infrastructures that was built in here, toilets, shower, a small kitchen, will provide the terrorists their needs. This list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. Hospitals or Hamas terror hideouts. The truth is slowly emerging for the world to see. And this is where they choose to hide everything. Bureau Report, India Today. So they use the hospital as human shield. So there are reports that leaflets have been dropped over Khan Yunus in southern Gaza Strip. Are we looking at an expansion of operations, ground operations in southern Gaza next? I quickly want to cut across to a man on the ground. Rajesh Pawar joins us for more from Sderot in southern Israel. Rajesh, there are reports that seem to indicate that Yoav Gallant, the Minister of Defense, and also Benny Gantz, both in the war cabinet, are in favor of expansion of ground operations to south. Is that what is likely to happen in the days
and weeks ahead? And what does that mean for the hostage crisis? Look, Gaurav, this is very clear. Now the Israeli plan is very clear. Now they have completely demolished every target of Hamas in north of Gaza. And after this, now their focus will be south of Gaza. But the biggest challenge in this will be the transfer of population. Now you see that all the people, civilians from North Gaza were evacuated to south of Gaza. Now the entire populations will have to be shifted back again in north of Gaza, where there is no civilian infrastructure anymore. Besides this, there are reports that yesterday IDF has bombed targets of Iranian proxies in Syria near Damascus. So these are indications that first IDF will take care of south of Gaza, and after that they will be moving north for taking care of Hezbollah. This seems to be the plan of IDF as of now, Gaurav. Okay, and overall, when you're looking at situation on ground, especially with the kind of evidence that Admiral Hagari seems to have put out, as Colonel Jonathan Connicus seems to have put out of what they claim was a command and control center of Hamas at the Al-Shifa and also at Al-Rantisi. What's the buzz on ground? Is this evidence that will hold in a court of law, or does it convince people that this hospital was actually a Hamas command and control center? Look, Gaurav, even the Americans have confirmed that there was Hamas command and control center under the hospital, this Al-Shifa Hospital. Most of the civilians here, the Israeli civilians, believe that to be true, and Israelis are going in a very systematic way as far as collection of evidence is concerned, documenting the evidence is concerned. They are going in a very systematic way, and I think if it goes to a court of law sometime later in International Criminal Court, I think they will stand the case because they are doing it in a very systematic way, and all the evidence is being collected right now, including DNA samples and the kind of weapons which are used on civilian cars. Gaurav. So DNA samples are being collected, samples of those who were taken hostage from southern Israel and held hostage at Al-Shifa, including the body of a 65-year-old woman whose body was found at the Al-Shifa Hospital. All of this is evidence that Israel is putting together. Stay with me, Rajesh. I also want to expand the scope of the story. The question now is the stage set for expansion of operations towards southern Gaza, including Khan Yunis area, where leaflets have now been dropped asking people, ordering people to vacate some localities where Israel says it will target Hamas strongholds it has intelligence about. There are also growing calls for a ceasefire and international investigations into alleged war crimes by Israel. Joining me now on this special broadcast is Joshua Huntman, a strategist and advisor to the hostage families and also former advisor to the Minister of Defense. Mr. Huntman, there are reports that leaflets have been dropped over Khan Yunis asking people to evacuate. What does this indicate and what does this mean for the hostage crisis? Well, thank you very much for having me. And let's remember how this all began. This all began with the greatest terror attack and the greatest massacre of the Jewish people since World War II, since the Holocaust on October the 7th. Since then, over 240 hostages have been held, civilians, men, women, children, the elderly, babies. In fact, another baby was born in captivity just this week, held in Gaza, held in the terror tunnels. And the IDF and the government of Israel, they have a responsibility, in fact, they have a duty to bring those hostages home and to do everything they can in their power to bring those babies and those children and those grandparents back to their families. Furthermore, they have a duty to dismantle the terror infrastructure of Hamas, because Hamas have said very clearly that October the 7th is just the beginning. Their leaders have said that they want to do this over and over again. And therefore, we have a duty to defeat Hamas in its entirety and to rid both Israel and the Palestinian civilian population of this despicable evil. But Joshua Huntman, I want to understand from you, if there is an expansion of these operations towards southern Gaza in areas like Khan Yunis, will this adversely impact the release of hostages? There are reports that talks are in an advanced stage for release of between 50 to 70 Israeli hostages in return for 50 to 70 or maybe 100 Palestinian hostages in Israeli prison and perhaps 3 to 5 days of ceasefire.
So I think we have to understand there's always this parallel track going on. Of course, the diplomacy is going on behind closed doors. That has been widely reported. And it appears that they are working on a deal with the international community, with many interlocutors, in order to bring home as many of these hostages as soon as possible back to their families. Again, there are 3-year-old children there, 5-year-old children, babies. We need to bring them home. So that is one track. The other track is, of course, the military track. And whilst this really is unprecedented to have a democracy chasing after a jihadist organization which has captured and kidnapped over 240 members of its public, the military operation must continue. It must continue, and there have already been successes. Even on the first week of the operation, one of the hostages was found and saved and brought back to her family. So this parallel track of the diplomatic and the military must continue in order to bring the hostages back to their families. Okay. There are reports that suggest that members of the Israeli war cabinet, they're in favor of expansion of operations to the southern parts of Gaza. Is the entire country on the same page on this? Will this help rescue the hostages, or will this delay that even further? Look, Israel is like India. It's a vibrant democracy with many, many opinions. You can speak to 20 people in the streets of Israel and receive 20 different opinions. However, the whole of Israel is united behind defeating Hamas. Because like I said, if we don't defeat Hamas, they will just repeat October the 7th, or they will try to repeat October the 7th again and again. Now, we must understand, and you discuss this in your report, the entire Gaza Strip has been turned into this spider web of terror tunnels. Whilst Israel does everything to protect civilians on both sides, the Palestinians have put their civilians on top of the terrorists. The Hamas regime is hiding beneath their children, hiding beneath their hospitals, hiding beneath their mosques and schools, and have chosen to hide underground. If they have now moved to the south of the Gaza Strip, then the IDF has a duty to pursue them, kill them, and restore peace and security, not just to the south of Israel, but also to the Palestinian people. I want to understand from you, and since you've been advisor to the Minister of Defense, how could Hamas, under the nose of Mossad, the Shin Bet, or all of Israel's agencies, build this complex spider web of tunnels over a period of time? I mean, what were Israeli intelligence agencies doing all along that 1,300 odd tunnels, about 500 kilometers length and breadth of tunnels could come up in the Gaza Strip, that narrow Gaza Strip? So we must understand, Israel left the Gaza Strip in 2006. Okay, we left the international community, put pressure on Israel to remove its communities, to remove its army bases. And what came in place was a terror regime. Hamas won an election, then kicked out, shot, and pushed their opposition off buildings. They turned it into a totalitarian, autocratic, theocratic Islamist enclave, and they turned the entire Gaza Strip into this terror base. Now, there have been many rounds of violence, as of course you have reported, and during those rounds of violence, Israeli intelligence has managed to put their hands on some of these terror tunnels, and indeed many of them have been destroyed. But when Israel left the Gaza Strip as a gesture of peace, they weren't expecting the Hamas regime and the Palestinians to turn this entire strip into a terror base. And now we are facing the consequences, and we have to deal with those consequences and remove this terror threat, both for the sake of Israeli civilians and indeed the Palestinian civilians. Because if we do not win this, if we do not deal with this threat now, then we will be speaking again in 6 months, in a year, with the same pictures on our screens, as Hamas have committed and said very loudly and clearly that they want to maintain this state of war, and they want to carry these acts out over and over again. I want to understand from you. Israel stands accused of using a communication blackout as a weapon of war in the Gaza Strip. Internet down, communications cut off. Is this to force Hamas to release hostages? Look, Israel is the only country in the history of warfare that, while fighting its enemies, actually sends over trucks of fuel and water and food and clothes, and actively encourages the international community to come in and build
field hospitals in order to care for the humanitarian needs of the population. Israel is fighting a very, very difficult and complex war with a cynical and evil terrorist organization, which is doing its utmost to increase civilian damage, civilian deaths on both sides. Israel, I think, it's unprecedented what this country has done in order to protect. But it's not just a communication blackout. It's not just a communication blackout. Look at reports that emerge from the Gaza Strip. There's shortage of food. There's no water. There's shortage of fuel. There's a shortage of medicines. And it's almost as if Gazans are being starved, forced to their knees so that Hamas releases hostages. Will this strategy work given this global criticism, rising global criticism that's coming Israel's way, Joshua? There's one address for that criticism, and that address is Hamas, because not only did they start this brutal war that we didn't want, okay, on 6th of October, we had a ceasefire. They started this war, and they have also been finished first, hostages can return later. So Israel has already implemented humanitarian pauses. There was a request from the international community, in particular from the Americans, and there were international pauses being implemented for a few hours a day in order to help vacate some of the civilian population from the north to parts of the areas in the south, and in order to save as many innocent Palestinian civilians as possible. You must understand, these scenes are heart-wrenching and heartbreaking for us as well. No one in Israel wanted this. We had a ceasefire on the 6th of October, but we are not going to agree to another ceasefire, which will just allow the Hamas regime and the Hamas terror operation to just rebuild, rearm, and get ready for their next round of jihadist violence and kidnappings and rape, butchering, murder, and beheadings. We simply will not allow that. Because the Palestinian Red Crescent societies say that Israel's now punishing the people of Palestine. It's not just restricted to the Gaza Strip. Take, for example, what's happening at the West Bank. The ambulance staff are being detained. Their staff are being prevented from reaching out to the injured, even in the West Bank. So first of all, let's be clear that on the 7th of October, we had our ambulances shot at. Indeed, a friend of mine who was an ambulance driver was shot and killed in his ambulance. The international community didn't say a word. On the other side, Israel is doing everything it can to protect the civilian population, to protect doctors, to protect ambulances, to work actually with the Red Cross, even though they have not had any access to our 240 hostages in Gaza, to protect the doctors and nurses who are doing God's work on both sides of this very difficult conflict. And there is now a rising clamor, not just for a ceasefire, but some are saying Israel needs to be taken to the International Criminal Court for widespread loss of civilian life in the Gaza Strip. How would you respond to that? Again, I think no country in the history of warfare has done more to protect civilian life on both sides of this. And I think that the democratic countries in the world who are facing this terror threat, like India, like the US, France, and the UK, understand very well what Israel is facing. They are backing Israel. And I believe that Israel will get the support of the enlightened nations in their fight against this Islamic extremist terrorism and in their fight towards freedom, so that lightness can indeed defeat the darkness, and we can move towards a future of brotherhood and sisterhood and peace in our region when the forces of darkness are finally defeated. So for these forces of darkness to be defeated, before I let you go, I want to understand this. If this war is being expanded towards the south, beyond Wadi Gaza, into southern Gaza Strip, where do those people go? They're anywhere out in the open. They're cramped and millions are living in the open, as we are being told. Where will those people go if the war is expanded to the south? So that's exactly what the flyers and the text messages and the phone calls are for. Again, I don't know the specific details, and I can't get into southern part of Gaza Strip. You are watching India Today. Powered by Finest, Be Sustainable Change, a BNP Group company.
Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp with the #1 election team as we gear up for the upcoming assembly elections. Do scan the QR code. Join India Today now on WhatsApp. Follow these steps. Open WhatsApp on your phone. Check for a new updates tab. Select Find Channel and type India Today. After finding the channel, tap the Follow button. लीडर हैं किशन रेड्डी का बयान देखा, जो तेलंगाना के प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर पावर में आएंगी तो हम पुराने शहर में घरों को बुलडोजर लगा देंगे। आप बताइए कि क्या नफरत है इनको पुराने शहर से। इनसे पहले उनका एक प्रेसिडेंट था, उन्हें बोला मैं सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं पुराने शहर पे, उसको नहीं हुआ, उन्हें टाइम हो गया। अभिनव आके बोल रहे मैं बुलडोजर इस्तेमाल करता हूं जैसा यूपी में इस्तेमाल किया गया। हम बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यहां बुलडोजर काम नहीं करता, या मोहब्बत काम करती है। या तुम्हारी नफरत काम नहीं करती, या मोहब्बत काम करती है। तुम नफरत की राजनीति करते हो, तुम तोड़ना तुम्हारा काम है। बुलडोजर लाके घर को तोड़ देंगे। अरे क्यों तोड़ेंगे घर को आप? किसी का बसा है घर आप तोड़ना चाहते, आपको वोट नहीं मिल रहा तो वोट कैसा लेना चाह रहे? हम बुलडोजर से घरों को तोड़ देंगे पुराने शहर के। ये नफरत की बातें बीजेपी करती है। Watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a B&P Group company. Co-presented by आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। Co-powered by पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस आज तक इंडिया टुडे स्पेशल प्रोग्राम। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में हमारे साथ एक न्यूज मेकर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी। हम उनके साथ जा रहे हैं उनके जहाज में, यहां से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर। अशोक जी, चुनाव का मौसम और क्या आप मानते हैं कि पूरी तरह से टक्कर है राजस्थान में इस बार, कांग्रेस बनाम बीजेपी? यहाँ का एक तरह से रिवाज रहा है कि हर 5 साल सरकार बदलती है और इतिहास देखा जाए तो कहेंगे कि अब बीजेपी की बारी है। 98 से 25 साल सरकारें बदलती रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं अभी केरला गया था जी। केरला में 70 साल से ही होता है, 5 साल एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन जी। इस बार जब मैं गया तो मुझे कहा इसका रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी की। क्यों? इसलिए कि अच्छा काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में सरकार रिपीट हो भी गई, तो मैंने कहा हमने तो जो काम किया कोरोना के अंदर, बिलोना मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया। ट्रांसफर मैनेजमेंट, कोई भूखा नहीं सोया, इंश्योर किया सबको हम लोगों ने इमदाद। तो क्यों नहीं यहाँ पर उसके अलावा इतने काम हुए हैं। 25 लाख का बीमा हो गया, यहाँ पर ओपीएड लागू हो गया, सोशल सिक्योरिटी में हमने 30 स्कीमें दी है,
कोई सोच नहीं सकता। मैंने ना शिविर चलाया हम लोगों ने, साथ गारंटी दी है। तो आप कह रहे हैं अपने सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स पर, आपके काम पर आप तैयार हैं ये चुनाव लड़ने के लिए, कि आप कह रहे हैं कि मुझे री इलेक्ट करिए मेरे काम पर? भाई जब केरला में खाली कोरोना के मैनेजमेंट से सरकार रिपीट हो सकती है, तो हमारे यहाँ तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। क्योंकि हमने देखा है पोल्स में अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता है, आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपके एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कहते हैं एमएलएस जो हैं उन्होंने उतना काम नहीं किया है और आपने बहुत कम एमएलएस की टिकट काटे, केवल 17। इसलिए लोग कह रहे हैं एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में अशोक गहलोत फिर से फंस जाएंगे। देखिए, काम जो है बहुत शानदार हुआ है, तो एमएलए थ्रू हुआ है। जो जनता की मांग थी वहाँ के लोगों की, वो मांगों को लेके आए, एमएलए मेरे पास आए होंगे, मैंने वो काम किए हैं। तो ये खाली थोड़ा एक तो ज्यादा प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया परसेप्शन के अंदर भी कि एमएलए के खिलाफ में बहुत भयंकर माहौल है। हाँ, कई जगह होगा, कई जगह ऑप्शन भी नहीं होता है। पर आज ये चुनाव तो ये है, मैं कह रहा हूँ चुनाव आप वोट मुझे दीजिए आप तो, क्योंकि हमने सरकार शानदार चलाई है। वादा करते हैं एक मौका मिलेगा और इसी मजबूत करेंगे हम लोग। तो आप अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाता हूं अशोक गहलोत के नाम कांग्रेस लड़ रही है, वहां भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ रही है और मोदी जी भी लोकप्रिय है, मोदी जी की भी लोकप्रियता है राजस्थान में। तो क्या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है? ये वो बनाना चाहते हैं मोदी जी, बीजेपी बनाना चाहती है। हाँ, पर हमने तो, हमारे राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रही है, सबका कैंपेन बहुत शानदार हो रहा है। 12 मीटिंग हो रही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक बार आ चुके हैं, खड़गे साहब भी, राहुल जी भी आ चुके हैं, प्रियंका जी 3 बार आ चुकी हैं। हमारा हाईकमान और कांग्रेस उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। पर क्योंकि मेरे बीजेपी तो मोदी जी के नाम पर लड़ेगी और मोदी जी, जैसे मैंने कहा, वो देश के नंबर 1 नेता माने जाते हैं और वो राजस्थान उन्होंने आकर आपको एक तरह से टक्कर दी है। तो क्या आप मानते हैं गहलोत बनाम मोदी है या नहीं? ये होना नहीं चाहिए। ये देखिए, मोदी जी जो है, क्या चुनाव के बाद मोदी जी आके यहाँ सड़कें बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तहसील खोलेंगे? क्या काम करेंगे वहाँ करके? खाली अपने नाम के वोट मांगना, ये गुमराह करना पब्लिक को। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आकर कहते हैं पेपर लीक, और ये तो मामला गंभीर है। 12 पेपर लीक हुए हैं 2018 से और पेपर और एग्जामिनेशन रद्द हुई। ये बहुत बड़ा मामला है, युवाओं का मामला है। यहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पेपर लीक होते हैं और एग्जाम रद्द होती है। क्या आप मानते हैं ये आपके सरकार की बड़ी कमजोरी रही है, जो बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठा रही है? देखिए, पूरे देश के अंदर, मैं नहीं कहता है भारत में पेपर लीक होना अनफॉर्चुनेट है, परंतु गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर पेपर लीक हुए हैं। हमने कम से कम कार्रवाई करी है, लोगों को जेल में डाल दिया, उन्हें मकानों में बुलडोजर चला दिया और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास का। नहीं, पर आपकी के जो अध्यक्ष है, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष दोतासरा, उन पर कार्रवाई हो रही है कि ईडी कह रहा है उन्हीं के थ्रू ये पेपर लीक हुए, पैसा बनाया गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है। 12 पेपर अब उनके बेटे, अब उनके बेटे का नाम मानना और कोई उनके खिलाफ आरोप नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी करके किसी का नाम बदनाम करो, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? पर अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? अभी भी आजीवन कारावास हमने कानून बनाया है, उसके बाद में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक और आरोप जो लगता है वो है माइनॉरिटी अपीसमेंट। प्रधानमंत्री, हम उदयपुर जा रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपने पहले रैली में कहा था कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कन्हैया लाल का उदाहरण दिया था कि 2 कट्टरवादी मुसलमानों ने उसको मारा था लास्ट ईयर जून में, और सरकार, वो आपकी सरकार से पूछ रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं मुस्लिम्स को माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। ये देखो, ये मारने वाले लोग थे और इन्होंने जो मारने वालों ने, ये बीजेपी के संबंधित लोग हैं और बीजेपी ने इनको छुड़ाया, थानों से छुड़ाया इनको, इनका स्वागत किया जो भी हज करके आए। तो इस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉरवर्ड करूंगा आपको मैं भी,
आप कह रहे हैं जिन्होंने कन्हैयालाल को मारा था उनका बीजेपी के साथ संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उनका कहना है कि आपने ठोस कार्रवाई कई ऐसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि एक तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और मुसलमानों को आपने बचाने की कोशिश की है। ये किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है कि नहीं राजस्थान में? ये तो बेहुदा बातें होती है। मैं क्या जवाब दूं इनका? इतना मैं कह सकता हूँ, ये लोग जो थे मारने वाले, ये बीजेपी के जो कुनबा बना उन्हीं से संबंधित लोग थे। इनका जहाँ तक मुझे ख्याल है, इनका स्वागत किया गया जब ये हरिवर्ष आए थे। नंबर 2, इनको कोई दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, छुड़ाने वाले बीजेपी के नेता थे। नंबर 3, नंबर 4, इतनी बड़ी संगीन घटना हो गई, दंगे भड़क सकते थे। मैंने मेरे टूर प्रोग्राम कैंसिल किए, आया उदयपुर के घर गया, इनके मोहल्ले में गया, चीफ सेक्रेटरी गई, हमारे डीजी पुलिस गए और हमने सांत्वना उनको दे दी। 2 घंटे पकड़ लिए हम लोगों ने, मुलजिम को 2 घंटे पकड़ लिए और उसी रात केस ले लिया एनआईए ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि एनआईए ने केस ले लिया, कोई बात नहीं, हमने इसलिए एतराज नहीं किया, हो सकता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, परंतु आज चुनाव आ गए हैं, तब तक कोई बता नहीं रहा नहीं कि कार्रवाई क्या की। इसका मतलब जानबूझ के इसको लंबा खींच रहे हैं, जिससे कि चुनाव के मौके पर हम इसको कैच कर सकें सांप्रदायिक की बात करके। तो एक हिंदू वोट बैंक नहीं है, आप नहीं समझते? बीजेपी एक हिंदू वोट बैंक बना रहा है राजस्थान में। देखिए, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। हम 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हम गायों के लिए उन्होंने दिए 500 करोड़ रुपए दिए अनुदान के गौशालों को, हमने 3000 करोड़ रुपए दिए अनुदान में। लंबीडों में गाय मर गई, हमने 40,000 रुपए दे रहे हैं प्रति गाय को, दे दिए हमने। कितने राज्यों में दिए हैं? और बीमा करें आगे भी 2 पशुओं का। और अभी गोधन योजना लेके आए थे कि गाय फिरे नहीं गलियों के अंदर आवारा पशु के रूप में। ये इसी बात पर मैं आने वाला था। इस चुनाव में आप कुछ आश्वासन दे रहे हैं, बीजेपी आश्वासन दे रही है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपने अपने 7 गारंटी दिए हैं। बीजेपी कह रही है वो अब सिलेंडर देगी 450 रुपए में, आप कह रहे हैं 500 रुपए में देंगे। आपने कहा है कि हर परिवार की जो महिला है उसको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। बीजेपी कह रही है किसी भी घर में बेटी का जन्म होता है, हम 2 लाख रुपए का बॉन्ड शुरू करेंगे। आप किसानों के लिए कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दुगना करेंगे। तो एक तरह से कंपटीशन हो गई है। आयुष्मान भारत सरकार करती है, आप चिरंजीवी करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। हर तरह से एक फ्रीबीज की एक दौड़ बन गई है। आपके गारंटीज, उनके गारंटीज, कौन विश्वास, किस पे भी विश्वास रखें? विश्वास हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हमने 5 साल सरकार चलाई है। जो कहा है वो करके दिखाया है। 10 गारंटी दी हम लोगों ने महंगे शहरों के अंदर, महंगाई को देखते हुए। तो आपको आश्चर्य होगा, 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए कैंपों में लेने के लिए। 1 करोड़ 85 लाख के लगभग कार्ड मिले लोगों को, और वो इम्प्लीमेंट हो गया गांव-गांव के अंदर। 25 लाख का बीमा हेल्थ का, वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप सोच सकते हैं विश्वास किस पे करेंगे। एक आपकी स्कीम का जिक्र बार बार होता है, चिरंजीवी स्कीम। क्या आपको लगता है कि ये स्कीम, जिस तरह से मोदी जी ने आयुष्मान भारत के जरिए एक तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए अपनी पहचान बना दी थी, क्या आप इस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि ये चिरंजीवी स्कीम पर लड़ रहे हैं, या क्या ये आपकी टिकट आप समझते हैं? देखिए, सत्ता के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, उन सब का मुकाबला करें तो राजस्थान बेटर स्कीम है। आप कह रहे हैं राजस्थान मॉडल इज बेटर देन गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल नहीं, दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का मॉडल। आप एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि वेलफेयर पे अपना मॉडल रखिए, मेरा मॉडल रखिए। और बताइए आप, उनका 5 लाख का बीमा है आयुष्मान भारत का, वो भी लोगों को पता नहीं है। वो खाली ऐसे चीजें जो सर्वे हुआ था यूपी गवर्नमेंट, उन तक सीमित है वो। और कई राज्यों में 20%, कई राज्यों में 25% तक सीमित है कैटेगरी। NFS वालों की कैटेगरी बना दी। हमारा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जो पूरे राजस्थान के वासियों के लिए है, गरीब अमीर कोई हो भले। तो आप एक तरह से चिरंजीवी 2 दिन का है फर्क, पूरे प्रदेश वासियों के बीमा है हमारा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है।
यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आम लोग समझ नहीं पाते इन बातों को, क्योंकि परसेप्शन बन गई थी कि ये जो कांग्रेस जो है एक दूसरे की लड़ाई की वजह से ये चुनाव हारेगी। अब परसेप्शन कुछ बनने वाली अलग बात है। काम जो हमने किया है स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। दुर्घटना बीमा कर दिया हम लोगों ने 10 लाख का। आपकी रिलेशनशिप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से कैसी है? क्योंकि सवाल बार बार उठते हैं, इज अशोक गहलोत फ्रेंडली विद राहुल गांधी या नहीं, या राहुल गांधी की एक नई जनरेशन आ रही है, अशोक गहलोत पुराने जनरेशन के, अहमद पटेल, सोनिया गांधी एक अलग जनरेशन के है। कोई जनरेशनल वॉर है? मेरे साथ तो कोई है नहीं। मेरे साथ तो संबंध जो है वो मैंने एक बात कही थी। विनोबा भावे की एक पुस्तक है गीता माता, उसमें वो लिखते हैं मेरा और गीता माता का संबंध जो है वो तर्क से परे है, नो आर्ग्यूमेंट, तर्क से परे है। तो मेरा और गांधी परिवार रिश्ता है वो तर्क से परे है। तो अगर चुनाव आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री आप ही, ये तो आप गारंटी दे सकते हैं। आपने 7 गारंटी दिए हैं। लोग जानना चाहते हैं गारंटी ये भी है क्या कि अगर वो वोट करते तो अशोक गहलोत ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री, कोई और तो नहीं बनेगा? देखिए अभी जो हालात देश में बने हुए हैं आप बिलीव नहीं करेंगे। अब हमें कोई पद की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी को भी चिंता होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। किस दिशा में जा रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं तो हम अमृतकाल आ रहा है देश में, उनके लिए अमृतकाल आ रहा होगा। तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। क्या है? क्या आपको क्या चिंता लगी हुई है कि देश का होगा क्या? क्यों? जिस प्रकार से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है देश के अंदर, आज कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक या कोई राजनीतिज्ञ विरोध में बोल जाए, आलोचना करते सरकार की, आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। जिस देश में ये स्थिति बन जाती है, कितने बेचारे लोग एक साल जेल में बैठ के आ रहे हैं बाहर, क्या हो रहा है देश के अंदर? चिंता वो नहीं चाहिए। अब क्या पद की चिंता करें हम लोग? पद बहुत कुछ मिल गया है। इन बातों के लिए चैलेंज जो हमारे सामने है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पार्टी क्या कर सकती है, मेरी हाईकमान क्या कर सकती है, उनका हम साथ देंगे। आप मुझे गारंटी ये नहीं दे रहे हैं राजस्थान की जनता को कि अगर वो कांग्रेस को वोट दे तो क्या अशोक गहलोत ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री, या कोई और है? ये फैसला हाईकमान करेगी। ये फैसला हाईकमान पे आपने छोड़ दिया है। एक आरोप लगता है कि पहले 2 साल आपके गए सचिन पायलट की बगावत को संभालने के लिए, उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद ये चर्चा हुई कि अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री के बजाय अब कांग्रेस के अध्यक्षा बनेंगे दिल्ली में, और अब पिछले 1 साल में आपने लगातार प्रयास किया है कि चुनाव आ रहे हैं, वोटर को लुभाना। कैसे देखते हैं कि क्या आप मानते हैं, ये जो बड़ा सवाल बार बार उठता है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पिछले 5 सालों में, पायलट बनाम गहलोत? देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो हो गया, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आपने वो छोड़ दिया है क्योंकि 1 साल पहले आपने वर्ड्स यूज किए, गद्दार हैं, ये है वो है। अब मैं देखता हूँ फोटो आप और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ है। ये तो 4 साल पहले होना चाहिए था। कहना मैं वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो बीजेपी का प्लान था, षड्यंत्र था उनका। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, वही चाल उनकी याद थी। उसमें वो कामयाब नहीं हुए, हमने कामयाब होने नहीं दिया। पर ये आप लोगों की आपसी लड़ाई थी ना, आप नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट आगे बढ़े। बीजेपी का पिक्चर में आगे फिर उन्होंने क्यों षड्यंत्र किया? उन्होंने उसका फायदा उठाया आप दोनों की लड़ाई। कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने लड़ाने का काम किया। ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो क्लोज चैप्टर है, चलिए मान लिया, क्या ये भी क्लोज चैप्टर है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी तब थी, कि आइए दिल्ली आप अध्यक्ष बनिए, और एक बगावत हो गई है और आपने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा? एक क्लैरिफाई कर दीजिए। ये बिल्कुल बात सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। वो पद बहुत गर्मा हुआ पद था, मुख्यमंत्री से 100 गुना ज्यादा पद में महत्वपूर्ण मानता हूँ, पद को मानता हूँ। वो एक रिएक्शन हो गया कि पता नहीं आज जाएंगे प्रस्ताव। आप तैयार थे जाने के लिए? मैं तैयार था, बिल्कुल। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, आपके एमएलए तैयार नहीं थे?
हाँ एग्जैक्टली वो उनके अंदर दिमाग में रहा कि वो या ये नहीं है सही कि आप चाहते थे कि पायलट ना बने इसलिए आप यहाँ रुक गए। मैं कुछ नहीं चाहता था, जो कुछ चाहते नहीं चाहते थे वो एमएलए ने खुद ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतना भयंकर हो गया, उसको हमको रोक नहीं पाए थे, इसलिए मैंने माफी मांगी जाके मैडम से। फिर आप पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ये चुनाव आपके नाम पे लड़ा जा रहा है और इसी वजह से हम आपके साथ हैं, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं आपका चेहरा दिख रहा है। तो कांग्रेस ने अपने सारे अंडे आपके साथ रख दिए इस बार कि अशोक गहलोत आप पर भरोसा है। देखिए पब्लिक का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनके विश्वास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे पास है मेरे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहीं जाओगे, राजस्थान की गलियों में जाओगे, गांव में जाओगे, ढाणे में जाओगे, और है कि नहीं कुछ, मेरे प्रति प्यार बहुत है, विश्वास बहुत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चलिए हम देखते हैं ये विश्वास जो आप कह रहे हैं, जो काम की बात आप कह रहे हैं, वो कितना जनता के बीच तक जाती है और जनता क्या चुनती है, ये हम जनता जनार्दन पर छोड़ते हैं। बट थैंक यू वेरी मच। अशोक गहलोत, राजस्थान चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये खास बातचीत। राजदीप सरदेसाई, आज तक और इंडिया टुडे के लिए। You are watching India Today, powered by Finest. Be Sustainable Change, a BNP Group company. Weather forecast now. Delhi, maximum 28 and minimum 14 degrees. Mumbai, maximum 30 and minimum 25 degrees. Kolkata, maximum 27 and minimum 21 degrees. Bangalore, maximum 28 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 29 and minimum 26 degrees. Hyderabad, maximum 30 and minimum 19 degrees. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. ये बताइए हमें प्रियंका, आप मध्य प्रदेश और बहुत फोकस कर रही है इस चुनाव में, कहीं ना पर ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन दोनों राज्यों में आपने बहुत फोकस किया है। किस तरह से आप ये चुनाव देख रही हैं? कि क्या आप वाकई मानती है कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत हासिल कर सकती है या कांग्रेस बैकफुट पर है? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जीत हासिल होगी और हमारा काम है लड़ना। हम अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता त्रस्त है, परेशान है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं, शिक्षा के माध्यम नहीं है, कुछ नया नहीं किया है, नया अस्पताल नहीं। इनकी सरकार है ना राजस्थान, जहाँ इनकी सरकार है, मेरी बातों को मत पलटिए। मैंने कहा जहाँ जहाँ इनकी सरकार है ऐसा हो रहा है, लोग परेशान है, तो क्यों नहीं बदलाव लाएंगे? जरूर लाएंगे। इस चुनाव में हम महिला वोट बैंक पर बहुत देख रहे हैं, हर पार्टी कई कई वादे कर के लिए। मैं बहुत समय से ये कह रही हूँ
और मुझे बहुत खुशी है कि सारे राजनीतिक दल अब इस बात को समझने लगे हैं कहा था कि महिलाएं एकजुट हो जाए। तो महिला बड़ी शक्ति है देश की, 50% है, उनको अपना अधिकार भी मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए और हर राजनीतिक दल को उनके लिए लड़ना पड़ेगा, उनको नकारा नहीं जा सकता। पर ये तो यूपी में नहीं चला, ये आपकी जो महिलाओं के लिए जो आपने किया था वो यूपी में नहीं चला। तो जो नई क्रांतिकारी चीजें होती हैं उनको समय लगता है चलने में, और अच्छा है, मुझे तो खुशी इस बात की और गर्व भी है इस बात की कि हम अलग से महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र भी बनाया। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक पहल ली और उसके बाद से बहुत जागरूकता आ गई है महिलाओं में भी और राजनीतिक दलों में भी कि महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो मुझे बहुत खुशी है कि हर चुनाव में अब से महिलाओं का बहुत बड़ा श्रेय होगा। जैसे आप चुनाव में पड़ गई है, कंट्रोवर्सी भी आ गई है मध्य प्रदेश में आप बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपने बयान दिया, शिवराज सिंह चौहान से लेकर हर नेता ने आप पर आरोप लगाया कि आपने चुनाव पर्सनल कर दिया, आपने सिंधिया को टारगेट कर दिया। सुबह से शाम तक तो हमें गालियां देते रहते हैं, हमारे परिवार के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को, माँ बाप सबको सुबह से शाम तक उल्टा सीधा कहते रहते हैं। हम तो कोई रोते नहीं है भाई इन बातों के, हम समझते हैं सार्वजनिक जीवन है, सुनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और ये भी थोड़ी हिम्मत करें। तो आप भी पर्सनल कर रही है अब चुनाव। पर्सनल क्या कहा? मैंने कहा कि महान अभिनेता इसमें पर्सनल नहीं, आपने कहा उनका हाइट छोटा है, ये सब आपने जैसे ही उठाया उनका अहंकार बढ़ा है, अहंकार बढ़ा और हाइट छोटा है, तो वो बड़े गुस्से में हो गए। तो उन्होंने कहा चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हाथी चीज है, और चुनाव मतलब भाषण के बीच में कुछ ऐसी चीजें ठीक है। चुनाव के मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में की सरकार ने 21 रोजगार दिए 3 सालों में, 21 रोजगार, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, इन्हीं पर बात। आखिरी सवाल, आपका रोल क्या है? आखिरी सवाल, आपका रोल फिर क्या है? राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, तो आपका क्या रोल है? मेरा रोल है अपनी पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ना जी, अपने देश के संविधान के सिद्धांतों के लिए लड़ना, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जिसके जीवन में मुश्किलें हैं, संघर्ष है, उनके साथ खड़ा हो। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है, आप 2024 का चुनाव अब लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी केवल स्टार कैंपेनर रहेंगी? तो बहुत दूर जा रहे हैं। नहीं, बहुत दूर नहीं, 6 महीने में, 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, आप केवल स्टार कैंपेनर हैं या किस तरह से? इनको मेरे ख्याल से कितने 20 सालों से देख रही हूँ, उससे ज्यादा 20 सालों से यही है इनका कि कहीं। अच्छा, आप अशोक गहलोत जी के साथ हैं, अगर यहाँ चुनाव कांग्रेस जीतती है तो क्या अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी दे सकती हूँ। तो कौन ये हाई कमांड है? कौन? खरगे जी है और कौन है? गांधी परिवार या खरगे जी? क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खरगे जी है, हम सब उनकी सुनते हैं। प्रियंका जी, आप अब जैसे आपने कहा 20 साल से आप पूछ रही हैं, आप इस तरफ आइए सर। तो आखिर में मैं उस तरफ। अच्छा, आखिरी सवाल, आप ये कैंपेन पर जाती हैं, आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी है? बदलाव क्या आया है प्रियंका गांधी में इतने सालों में? आपने कहा 20 साल से मैं यही सवाल पूछता हूँ, आप में क्या बदलाव आया है? तो आप बताएंगे ना। नहीं, ये आप मुझे बताइए कि आप क्या बदलाव नजर करती हैं? आप ज्यादा मैंने यूपी के चुनाव से और वहाँ पे काम करने से बहुत सीखा। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने? एक राजनीति की जो एक वास्तविकता है, जो जमीनी चीजें हैं, वो बहुत सीखी मैंने। मोदी जी वहाँ हैं, क्या कहेंगी आप उनको? कहाँ? अगर कैमरा पर अगर आप कुछ उनको कहना चाहें, क्या कहेंगी? मोदी जी और बीजेपी को आज आप क्या कहेंगी? वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी केवल चुनाव के टाइम पे नजर आती है, बाकी नजर नहीं आती, क्या कहेंगे उनको? मतलब उसका जवाब दो मोदी जी को। हाँ, बीजेपी को जो धारणा है, मेरी धारणा तो नहीं है। आपकी क्या धारणा है? मेरी धारणा ये है कि मैं काम करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रोज करती हूँ, 24/7 पॉलिटिक्स। दिखती हूँ, कभी ज्यादा दिखती हूँ टीवी पे, कभी कम दिखती हूँ, पर आप करती रहेंगी। क्यों नहीं, बिल्कुल। एज अ स्टार कैंपेनर आप भी मुझे 20 सालों से देख रहे हैं। मैंने कहा 2024 का चुनाव एक बार फिर पूछता हूँ, रायबरेली से लड़ेंगी? हाँ? रायबरेली से लड़ेंगी आप?
वो आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, विल दे फाइट टुगेदर? क्या वो एकजुट होकर लड़ेंगे? प्रियंका होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। क्या आपने उनको साथ लाने की कोशिश की थी? इस चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है और कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। चलिए अशोक जी, उस पर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे एट द रैली। थैंक यू प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी। बाय फॉर नाउ। You are watching India Today, powered by Finest. Be Sustainable Change, a BNP Group company. In the middle of a trade war and global power play, US President Joe Biden and his Chinese counterpart Xi Jinping held talks in San Francisco. The dialogue, described as constructive, is seen as a step towards thawing frosty relations between the two countries. President Biden and President Xi agreed to re-establish military communications, open US-China hotline, get experts to discuss risk of artificial intelligence, and stop proxy attacks on the US in the Middle East. The leaders reached an agreement to reopen military contacts that were cut after then House of Representatives Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. But in an off-the-cuff remark, President Biden, while leaving the press conference, took a jibe at Xi. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that we used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. China hits back, claiming US and China can only be adversaries or partners with no middle ground. China claims remarks were extremely wrong and an irresponsible political manipulation. This kind of statement is extremely incorrect and irresponsible political manipulation, which China resolutely opposes. It needs to be pointed out that there are always some ill-intentioned individuals attempting to sow discord and damage in the US-China relations. Ties between the US and China have been strained since spy balloons were spotted in American skies this year. The two sides have also escalated a trade war, with China instituting new export curbs on critical minerals last month. Bureau Report, India Today. See you